उतना तो नहीं मजा आया होगा जितना हमें बैंगलोर में आया था। Because I remember people on the first day having their CVs and going door to door, get the reviews. You went without work ex, right? 3 सेमेस्टर्स होते थे, हम लोग को 2 सेमेस्टर की आदत थी। लगातार एग्जाम्स हुए जा रहे हैं। इंडक्शन से ही शुरुआत हो जाता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है। It's the same thing कि लैंडलाइन पे हम बात करते थे, लोग आज मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बट बात का टॉपिक तो सेम ही है ना। I saw that like some people were really serious about placements. How much was your fees? अटेंडेंस वाला पंगा उतना ज्यादा नहीं होता बाकी MBAs में जितना IIMs में होता है। So Bhupendra, you got into IIM Lucknow. Tell us a bit about your 2 years there. उतना तो नहीं मजा आया होगा जितना हमें बैंगलोर में आया था। मुझे नहीं पता कि आपको बैंगलोर में क्या मजा आया था, बट एटलीस्ट इट वाज वेरी फन, राइट? आई मीन लाइक बिकॉज इवन जैसे बीटेक करके जब आप बी स्कूल में आते हो तो रिलेटिवली काफ़ी डिफरेंट माहौल मिलता है, वुड से या बिकॉज हम मुझको ऐसा लगता है कि बीटेक में हम काफ़ी बच्चे होते हैं, एंड जैसे ही वहाँ से बी स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी बड़े लोगों के साथ भी मिलने लग जाते हैं, एंड you also have kids who are there, but they also kind of mingle like that, and like start taking their careers more seriously, I guess. Because I remember people on the first day having their CVs and going door to door, get the reviews. I was like, I didn't I don't know why you are doing it. You went without work ex. Yes, I right? went without work ex, yes. And what's the proportion of your class out of 450 people? What percentage was with work ex, without 50 work 50, I ex? think so. 50 50 at that point of time. And the 50% with work ex, so I normally think कि वो जो up to 1 year, 1.5 year work ex ना थोड़ा सा एक वो minor work ex बोल सकते हो, और फिर 2 year plus को major work ex बोल Yes, सकते हो। yes. Yeah. So वैसे थे major work ex वाले लोग। हाँ थे, मतलब बट नॉट मैनी, आई वुड से 40% से 30% के बीच में हो गए, टुवर्ड्स मोर 30, आई गेस, नॉट इवन 40. तो बाकी तो मतलब 50% आपके फ्रेशर्स हैं तुम्हारी तरह। राइट. So that should not be a problem, right? They're all in the same boat as you. हाँ, बट मेरे मतलब डिपेंड्स ऑन whom you meet and who you become your friends also, right? So मेरे नॉर्मली लोग जो मेरे ग्रुप में थे वर्किक्स वाले थे काफ़ी, not everyone was a fresher, but yeah, so maybe I feel it like that. It was very fast paced. It was like a 3 सेमेस्टर्स होते थे, हम लोग को 2 सेमेस्टर की आदत थी। लगातार एग्जाम्स हुए जा रहे हैं, बॉल गेम ऑल्सो, राइट? सो इंडक्शन से ही शुरुआत हो जाता है कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, राइट? तो दैट इंडक्शन प्रोग्राम इज फन, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन बैंगलोर. योर इंडक्शन मस्ट बी ऑल्सो फन, आई गेस. I mean, honestly, all IIMs, especially the top 6, top 10 IIMs, I can't speak about the latest new ones because they're also still establishing, finding their feet. But बाकी सारे IIMs are all the same. ठीक है, मेरे हिसाब से 19-20 का फर्क होता है, and I've not seen any other IIM, but I've heard of, because of our channel, we've heard from people across IIMs, across batches, and one thing I keep hearing in different words, and my line is, the more things change, the more they remain the same. तो जो 25 साल पहले मैंने देखा था, वो आज भी वही हो रहा है, people graduating 2 years ago, और and obviously, exactly वो नहीं हो रहा। इट्स द सेम थिंग कि लैंडलाइन पे हम बात करते थे, लोग आज मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बट बात का टॉपिक तो सेम ही है ना। अब बात तो वही कर रहे हो ना, मम्मी ये हो गया मेरे साथ आज। फाइनली फोन तो आप वही कर रहे हो। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स जनरेशंस चेंज, and like that, Lucknow, Bangalore, Ahmedabad, Calcutta, whatever else, Udaipur, विशाखापट्टनम, ये सारे सिमिलर ही हैं। एंड ऑन दैट यू मेंशन्ड कि लोग सीवी लेके घूम रहे थे। डज दैट हैव एनीथिंग टू डू कि समर प्लेसमेंट्स? नहीं, वो तो शुरुआत में, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला वीक just हाँ getting into the IIM, right? I saw 1 or 2 people हाँ actually going to their whatever
I don't know whom they assigned mentors, because that time no mentor was also assigned for CVs. So they did travel with their CVs. So I saw the, like, some people were really serious about placements, because it's it's like it's crazy money also, right? I mean, like, in terms of the fees which people are paying, and uh, How much was your fees? it was around 13 lakhs, and then there is plus whatever the expenses of the hostel, etc. It came out to be around 15, 16 lakhs rupees, because I also did a students exchange. That was expensive. Yeah. Where did you go for your student exchange, Bhupendra? I went to Milan, Politecnico di Milano, Milan, and there's MIP. करके, they have Hmm. a MBA school. So, That I think you that spent around 16 lakhs over 2 years, yes, yes. including the exchange. So, सस्ते में छुट गए भाई. नहीं, एक्सचेंज का तो मतलब तो हिसाब ही नहीं है कोई. exchange के एक्सचेंज का साथ में हिसाब नहीं है. आई रिमेम्बर, लाइक, द एक्सचेंज वाज लाइक वन सिग्निफिकेंट piece, because that gave me different exposure, and I kind of did backpacking across for 3 months. It's the courses which at least were getting taught at that point of in my college were basically, I think we had already completed those. This was almost like a revision of what we had done before. Having done two MBAs technically, from one from Europe and one from India, attendance वाला पंगा उतना ज़्यादा नहीं होता बाकी MBAs में, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, चाहे यूएस में हो या यूरोप में हो, जितना आईएम्स में होता है. आई थिंक आईएम्स में तो होता है कुछ ना कुछ अटेंडेंस का पंगा. एक्चुअली फॉरगॉट एवरीथिंग कितना होता था. बट या वी यूज्ड टू गो टू क्लासेस रेगुलरली. मतलब ओवरसीज मेरे को जो समझ में आया, देयर हैड दिस वियर्ड थिंग कि 80% से ऊपर अटेंडेंस यू विल बी इवैल्यूएट, लेट्स से ऑन अ स्कोर ऑफ 100. And if you have like less than 80, then we'll reduce the maximum marks. So we said, okay, do that. We don't really care about that attendance at this point of time. Somehow we were able to cross that 80% marks in some way or the other. Like, अच्छा. So how many women in your batch at Lucknow? out of 450, I think 150 were women. You were 450 in one batch, Yes, or so total 900 in two batches. yes. Wow. In our next batch, there were Wow. 240 women, 250 women. So the number of men Hmm. reduced significantly from, like, Got it. the batch previous to us. Yeah.